चालू है ना सर? How are you all? MashaAllah. First of all, Happy Independence Day. See, we are gathered here on a very specious, very special and important event. As you know that today we are celebrating our 80th Independence Day. And we are very fortunate. Among us we have the President of Sufa Foundation, Muhammad Fazil sir. I request him, sir, please take it in. And we have our educational counselor, Sayyid Jafar sir. I request him also, sir, please take it in. We go further and we really fortunate our principal, Abdul Sadhu sir. Sir, please have a seat, sir. And further, our HM Ayub Khan sir, sir, please take a chair. We are waiting for other management members also, and we hope that inshallah very soon we will have them also. So as I told you that we gathered here today to celebrate our 80th Independence Day. So first of all, I have to say some introductory sentences and few words regarding the Independence Day and another thing also. See, we should know that the freedom which we have today, it is not easy to live freely in any country. You know that we were slave of British before 1947. And our freedom fighters, they played very important role to get the freedom. Lakhs of people, crore of people who devoted their lives, their dreams, all things that they were having, they devoted for the freedom of the country. So most of the people know that the people of every community of India played very important role to gain freedom of India. But we feel something that कुछ मिसरे हैं जो मैं अपने दिल की बात कहना चाह रहा हूँ कि पेश पेश थे जो कल आशिया सजाने में, पेश पेश थे जो कल आशिया सजाने में, जिक्र ही नहीं उनका अब किसी फसाने में। जान हमने दी यारों तब शहीद कहलाए, जान हमने दी यारों तब शहीद कहलाए, मुब्तला थे तानाज़न उंगलियां कटाने में। तो today we are remembering the freedom of fighters, particularly we have the name see on these boards. These people played very important roles, and we should know the names of these freedom fighters also. In general, we don't hear the name of these people. So today, the students who will come here and they will deliver these speeches, so you will come to know that who were the freedom fighters, and they played very important role in the movement of freedom. So we go further, I will not take so much time. You know that why we gather here, and our students will come here, they will share their speeches, and we will come to know that what kinds of sacrifices have been given for this. So we go further that there are so many events, but first of all, I will call a student of 7th A, Naima Kausar, daughter of Nadeem Ahmad. She will deliver a speech in English. So first of all, Naima Kausar, come. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today's program's president, honorable chief guest, honorable guest and principal sir, and all respected teachers, assalamu alaikum. I am Naima Kausar from standard 7, section is Saturn. Today
the Britishers captured the capital of this country. Hazrat Tipu Sultan was also killed by the Britishers in Mysore. In the year 1857, a large number of scholars and people sacrificed their lives for this nation. The British rulers imposed the cruel rules on this whole country. A public revolution was raised in this country. Ali brothers, Maulana Abdul Kalam Azad, Mahatma Gandhi, Dr. Baba Saheb Ambedkar and other scholars raised their voices with the people for this freedom. A lot of people sacrificed their lives only and all things for the freedom. But this made a great impact and a great problem for the British government. So, in the last, the British government, in the history of India, at 15th August 1947, they declared India as a free nation. So friends, in the last, I would like to see you all and complete my speech with these beautiful words that are, ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जज़ाकल्लाह खैर। MashaAllah, very beautiful. She was Naima Kausar, daughter of Nadeem Ahmed 7A. She delivered her speech nicely. Now we go further. See, you should know that first we are giving the opportunity to the students who will deliver here speeches in different languages. Just we heard a speech in English. Now I am going to call Abrish Masifa, daughter of Javed Khan, 7A. She will deliver a speech in Urdu. Come on. जनाब सदर, मौजूद सत्याग्रह और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जब गुलिस्तानों की जरूरत पड़ी, तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब हमसे कहते हैं ये अहले चमन कि चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। हिंदुस्तान को तवील जद्दोजहद के बाद आज़ादी की नेमत हासिल हुई, जिसके लिए हमारे अफराद ने जबरदस्त कुर्बानियां दी। तहरीक चलाई तक एग्जाम पे चढ़े, फांसी के फंदे को जुरान का हौसला और बहादुरी के साथ गले लगाया। कैदो बंदी से उम्मतें झेली और असूल आज़ादी की खातिर मैदान जंग में निकल गए। आखिरकार गैर मुल्की अमीर इस मुल्क से निकल जाने पर मजबूर हुए। गैर मुल्की हुक्मरानों ने अपने इक़्तिदार को बाकी रखने के लिए तरह तरह की चालें चली, रिश्वतें दी, फिर वाराना खिलाफत फैलाए, हक़ाइक़ को तो मरोड़ कर पेश किया, तारीख को मस्ख़ किया, आपस में गलतफहमियां फैलाई। हत्ता कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के बाशिंदों पर जुल्म सितम और लोगों को नाहक तख्तदार पर लटकाया, उन पर नाहक गोलियां चलाई और मगर उनके जुल्म सितम को रोकने और तौक़े गुलामी को गर्दन से निकालने के लिए बहादुर मुजाहिदीन आज़ादी ने उनका मुकाबला किया और इस मुल्क को आज़ाद किया, आज़ाद करके सुकून की सांस ली। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद हुआ। सामना जुल्म का बेखौफ खुदा हमने किया, सामना जुल्म का बेखौफ खुदा हमने किया, वक्त आया तो फिदा से हमने किया। आज फूल नजर आते हैं आज़ादी के, उन गुलों के लिए कांटा बस पर हमने किया। जज़ाकल्लाह। MashaAllah, excellent. She was Abrish Masifa, daughter of Javed Khan, 7A. Before going further, we should know that as we were slave of British, and we can imagine the situation. Somebody wrote very nice line that a bird in a cage can never be happy. A bird in a cage can never be happy, even though it is a golden cage. So, Alhamdulillah, today we are free from the clutches of British rule. Now we are going further. It is the turn of Marathi speech. For that, I will call here Adiba Gohar, daughter of Sayyid Munshi from 7A. Marathi speech will be delivered by Adiba Gohar.
माईक माननीय अध्यक्ष मोहम्मद फाजिल सर, प्राचार्य सर आणि मुख्याध्यापक सर आणि शिक्षक म्हणून उपस्थित पालक आणि माझ्या प्रिय मित्रमैत्रिणींनो, सर्वांना माझा अस्सलामु अलैकुम. माझं नाव अदिबा गौहर आहे. मी 7व्या वर्षाची विद्यार्थिनी आहे. स्वातंत्र्य हा प्रतीक माणसाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि त्या हक्काचं रक्षण करणे हे प्रतीक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. आज आपण भारताचा पवित्र आणि ऐतिहासिक दिवस 15 ऑगस्ट मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यासाठी येथे एकत्र आलो आहोत. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला ब्रिटिशांच्या गुलामीतून स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्य लाखो ज्ञान अज्ञान स्वसैनिकांचे त्याग संघर्ष आणि लोकांनी भाषेतील खांबाला खांदा लावून सहभाग घेतला. मुस्लिम स्वसैनिकांचे त्या योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मौलाना अबुल कलाम आझाद हे महान स्वसैनिक, विद्वान आणि राष्ट्रपती होते. त्यांनी हिंदू मुस्लिम एकाच संधीला आश्रमाच्या माध्यमातून देश मजबूत करण्याचा विचार मांडला. अशरफुल्ला खान हे निर्भय क्रांतिकारक होते. त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणाची आहुती दिली. त्यांचे धैर्य आणि देशप्रेम आज ही प्रत्येक भारतासाठी प्रेरणादायी आहे. यशिबा बेगम हजरत महल यांनी स्वतंत्र लढ्यात महत्त्वाचे योगदान दिले. त्यांनी 1857 औरंगजेब सम्राट शौर्याचे नेतृत्व केले. या महान सैनिक आपल्या शिकवले की देश सर्वात मोठा आहे आणि भारताचे हे सर्व भारतीयांच्या ऐक्याचे आणि बलिदानाचे फळ आहे. आज आपण सर्वांनी देशप्रेम, राष्ट्रएकता, संविधानाचा आदर, प्रामाणिकपणा या मूल्यांचे पालन करण्याची प्रतिज्ञा करूया. आपल्या प्रभुत्वाने भारताला अधिक विकसित, सुरक्षित, समृद्ध राष्ट्र बनवूया. विविधतेत हीच खरी ओळख आहे. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. MashaAllah, she was Adiba Gauhar, daughter of Syed Munshi from 7th A. Now I am going to call the girls of 7th A for patriotic song We Shall Overcome. The girls from 7th A are being invited here for the patriotic song. मेरे उरूज की शाही है पस्तियाँ मेरी, मेरे उरूज की शाही है पस्तियाँ मेरी, बड़ी बुलंदी परवाज़ से गिरा हूँ मैं. Now we will listen. The song will be presented by the girls of 7th A. We Shall Overcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, a very happy Independence Day. We are the girls of 7th Saffron. Today we are presenting a song, We Shall Overcome. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome.
excellent performance from the girls of 7th A represented here. We shall overcome. Now I am going to call students from 7th C, Mohammad Zain Sheikh Wasim. He will deliver a speech in English. Mohammad Zain Sheikh Wasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected Fazil sir, Principal sir, HM Ayub sir, Jafar sir, and all the teachers and their students. Today we are gathered to celebrate a very special day for our country, India's Independence Day. Every year on 15th of August we celebrate this day with great joy and pride. On this day in 1947, India became free from British after a very long and hard struggle. It became freedom. Today is a day to remember our beauty, and freedom is a precious gift. A brave freedom fighter like Maulana Muhammad Ali Johar, Maulana Azad, Ubaidullah Sindhi, Maulana Ashrafullah Khan, Dr. Gopali, and many others lived their entire life. Let us promise we will work hard to make our country stronger, safer, and more beautiful. Thank you, Allah. Very good. He was Mohammad Zain Sheikh Wasim from 7th C. Further, before going further, we should know that in our Sufa English school, really I am telling you honestly that we have few jewels. हमारे पास कुछ ऐसे हीरे मोती हैं जो वाकई में we will proud on them. The students like Hania Tasmeet from 8th A. We cannot imagine that how much talent can a girl have in her. So I request to all the management members and teachers and students, you see and observe her, what a talent she is having. Hania Tasmeet from 8th A. She will come here and deliver a speech, but before giving her an opportunity to deliver a speech, I will say you some line that देखिए अभी तक हमारे पास जो हमारी तारीख है और हमारा जो प्रेजेंट है, हमारे पास जो क़यादत की कमी है, जब हम ऐसे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो एक उम्मीद जगती है कि हमें ये कहने का मौका अब नहीं रहेगा कि कमान सामने रखी है तीर गायब है, कमान सामने रखी है तीर गायब है, हमारे अहद के लश्कर का मीर गायब है. But we will have in future some students who will lead us in our society, in our community, to our society, to our country and our whole world. They will lead, inshallah, in future. So I would like to call here Hania Tasmeet from Standard 8A. She will deliver a speech. Good morning to all the Chinese. नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. I'm Hania Tasmeet from 8th and an honest citizen of India. I promise with you for as I walk on the stage, some of my oh no, another independence speech. Now we hear the story. We have to listen inside. Here comes one more speech. Am I right? Well, don't worry. I'm not here to repeat the speech. Memorize what you have everything about. But I'm here to talk about something more important. Our future. Because history has been written by us in the past. The real question is, what history are you going to write? I want you to listen carefully. Because by the end of my speech, you will look at Independence Day in a completely different way. Today, our freedom of life shines in the sky. Let us remember that every color, the sky is a story of sacrifice, courage, and hope. Comes Azad. Means of God, not his humanity life. Some gave up their dreams, some gave up their families, some gave up their comfort, and many gave up their life. So we could be in the air of freedom. But let me ask you one thing. Are we truly free today? Yes, we are free from British. But are we
then our journey towards true freedom is still incomplete. And this is infinity, only one chapter in history book. Let me remind you of something. During these protests, people of different religions, different castes, and communities stood together to demand justice. Hindu, Muslim, Sikh, Christian stood side by side because they believed the same justice. There is a beautiful line by Allama Iqbal. मतलब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मतलब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम पर हिंदुस्तान. These are not just words, these are soul of our nation. Different religions, different communities, different languages, different cultures, but one nation, one constitution, one freedom, and dream. Our freedom fighters dream of India where every citizen would live with dignity. And India where our differences become our strength, not our weakness. And my friends, as the youth of the nation, we should never remain silent when something wrong happens around us. Bhagat Singh, तुम मुझे मार सकते हो मेरे विचार में नहीं, तुम मुझे मार सकते हो मेरे विचार में नहीं, तुम मुझे कैद कर सकते हो मेरी आत्मा. My friends, let's go now. You will change India. We Indians will think of vision, leaders, or democracy. But let me tell you, the next doctor, the next scientist, the next teacher, the next soldier, the next IAS officer is sitting in this audience. Yes, you never think you are a student because brigade leader was once a student. Every freedom fighter was once a young dreamer. So my friends, don't ask, what has my country done for me? Instead, ask, what can I do for my country? Study honesty, respect your elders, help everyone without expecting any result from them. Because patriotism is not shown only by one day in a guidance freedom once a year. It's shown by our daily action. Because freedom is not it's our responsibility. So I want to conclude my speech. This day, मैं कबीला के भी वतन की बात, this day, मैं कबीला के भी वतन की बात, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वफा. These are my emotions towards my nation. Happy Independence Day to all of you. MashaAllah, excellent. She was Hania Tasmin, daughter of Dr. Mojdar Khan from 8A. We must appreciate her talent and we hope that inshallah such type of students will lead our community in the future and we will have proud on them. See next after this we have a group speech, a patriotic song. It will be performed here by the students of 8B. The students of 8B will present here patriotic song. Actually it is an action song and we must appreciate their efforts. Arfat Ansari sir trained them and we see that how much hard work will be had been required for this song. So these are the students of 8B. तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा हो मारे या कोई मारे ना यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम चाहते भी पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। अपनों से हंस के खेलना कितनी तो हमने हिम्मत है, घोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमने ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की दीवार, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो सोना बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो पागल बनके पर है छाया। कंधों से मिलते हैं कंधे, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं तैयार हैं। अब जो भी हो सोना बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो पागल बनके पर है छाया। कंधों से Excellent performance by the boys of 8B. They presented here an action song. After that we will go further. As I told you before, we have very talented students in Sufa English School. We have seen before that in the form of Hania Smith. To more girls, we must appreciate their talents. So I would like to request all the audience here, students, teachers, the management members, please carefully, we have to listen to these two girls. They are Ashna Khan, Zakirullah Khan and Alisha Amit Pathan from 8A. So they will present here, they will discuss something, they will ask us and we have answered them. We will not only listen to them, we will think what they are asking us and they want some answers also. So I am going to invite here the girls from 8A, Ashna Khan, Zakirullah Khan and Alisha Amit Pathan from 8A. To the Honorable President, Mr. Mohammad Fazil Sir, Principal Abdul Sabir Sir, Headmaster Ayub Khan Sir, Educational Counselor Sayyid Jafar Ali Sir, Supervisor Farida Shakirali Ma'am, all the dignitaries present here, and my class teacher Nazla Kazim Ma'am, all the dear teachers present here and my dear colleagues. Assalamu alaikum. Myself Ashna Khan and I am from 8A. And I'm your friend Alisha Amit Pathan from same class. Before we begin, let me ask you one simple question. What is freedom? It is just a holiday on a calendar, a parade, or it is something much more precious. Today, my partner and I invite you to think beyond the celebration and discover the true meaning of independence. Imagine waking up one morning without the freedom to speak your thoughts, without the freedom to choose your dreams, without the freedom to live with dignity. It is difficult to imagine, isn't it? That's because thousands of men and women sacrificed everything so that we could live our today. On 15th August 1947, India did not just become independent. India found its voice. It was a day when courage defeated fear, hope defeated darkness, and millions of dreams come alive. That is why Independence Day is not just a celebration. It is a reminder that freedom comes with responsibility. India is not just a country. It is a family of many languages, different cultures, beautiful traditions, yet one identity. We are Indians, and that's the true strength of our nation. Before we continue, we have one small request. Please don't judge our speech too quickly, because even the best speakers started with their first step. Today is not about speaking perfect English. Today is about expressing our love for our India. Someone beautifully said, freedom is not the end of a struggle. It is the beginning of responsibility. Our freedom was built by the sacrifice
India's history. Ashraf Ullah Khan was one of them. He joined revolutionary movement against British rule and was executed by the British on 19 December 1927. Begum Hazrat Mahal showed a remarkable courage during the uprising of 1857. She left behind the royal and comfort life and led resistance against the British rule in Lucknow. Maulana Abul Kalam Azad fought through his words, leadership and commitments to the freedom movement. Khan Abdul Ghaffar chose the path of non-violence and stood firmly against the British rules. Our freedom fighters fulfilled their responsibility with courage. Now it's our turn, not by carrying weapons, but by carrying values. Not by fighting wars, but by spreading knowledge, kindness and respect. आज हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिंसियर सिटीजन, रिस्पांसिबल सिटीजन और कंपेशनेट ह्यूमन बीइंग बने, because the future of India is being written in classrooms like ours. Our Dr. APJ Abdul Kalam once said, dream, 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 dreams transform into thoughts and thoughts result in action. So let us dream with courage, learn with dedication, work with honesty, and always remember one thing, that every small action makes our nation stronger. Whenever the tribal arrives with hands in the sky, we silently ask each one of us, how do you serve your nation? Maybe we cannot change the whole country today, but we can change it by changing ourselves, one good habit, one honest decision, and one kindness at a time. Some people give their tomorrow so that we could live our today. Let us honor their sacrifices not only with our words, But with our action. Thanks. Have a nice day. Assalamu alaikum. Excellent performance by the girls of 8A, mashallah. They were Ashna Khan, Zakirullah Khan and Alisha Amit Khan. We go further, we have patriotic song, Tarana. It will be presented by the students of 6th B. They are Zahid Malik, Sajid Ahmed and Sayyid Shayan Akhtar, Sayyid Naushad Akhtar from 6B. So this patriotic song they will present here. Before calling them, I want to present before you two lines. कि तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, ऐ वतन हम तुझे रुसवा नहीं होने देंगे. The students of 6B. Come on. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाने भारत पे लेने को तैयार है, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जाने भारत पे लेने को तैयार है, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। गोली सीने पे खाई डरे हम नहीं, गोली सीने पे खाई डरे हम नहीं। वक्त पड़ने पे पीछे हटे हम नहीं, वक्त पड़ने पे पीछे हटे हम नहीं। दो पे खड़े तेरे अंसार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। रुकने से ना दुश्मन के रुक पाएंगे, रोकने से ना दुश्मन के रुक पाएंगे। अपनी धरती की अजमत पे मर जाएंगे, अपनी धरती की अजमत पे मर जाएंगे। ऐ वतन तेरी उल्फत में सरशार है, ऐ वतन तेरी उल्फत में सरशार है। हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जाने भारत पे लेने को तैयार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। हटना मैदान से हमको आता नहीं, हटना मैदान से हमको आता नहीं। बच के दुश्मन कोई हमसे जाता नहीं,
बच के दुश्मन कोई हमसे जाता नहीं, फातिह है जंग है गैर फरार है, फातिह है जंग है गैर फरार है, हम वफादार है, हम वफादार है, जान भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार है, हम वफादार है, जान भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार है, हम वफादार है। These are the students of speech. They were Zahid Malik, Sajid Ahmed and Sayyid Shayan Akhtar, Sayyid Naushad Akhtar from 6B. Now we are going further. Before going further, I want to say that as I mentioned in my speech, that so many Muslim freedom fighters who have been forgotten today. But see, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपाए छुप नहीं सकती हैं, और कुर्बानी जो खुलूस से दी जाती है वो रंग लाती है. So this is the day when we should remember the freedom fighters of our community also. आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो कुछ स्लोगन्स हैं जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे अंग्रेज़ों भारत छोड़ो. तो ये जो बिगिनिंग थी ना, आपको हैरत होगी कि इसकी शुरुआत उन लोगों ने की है. So we have a girl who will deliver a speech here in Urdu, and she will mention inshallah that one. She is Aisha Sheikh Ghaffar from 6A. She will deliver a speech in Urdu. But before that, Alhamdulillah, we are very fortunate that we have our Secretary of Sufa Foundation, Mr. Ayaz Ahmed Khan, Shafir Khan. Sir, I would like to request you, please take a chair. He is a Secretary of Sufa Foundation, Ayaz Ahmed Khan, Shafir Khan. Sir, we welcome you, sir. Thank you so much. You spent a precious time and came to our school to appreciate our students and our teachers also. Thanks a lot. So we have now the Urdu speech will be delivered by Aisha Sheikh Ghaffar from 6A. Come here. जनाबे सदर मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो वो ज़ौक़-ए यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। आज मैं हमारे शहीद हुए जवानों के मौजू पर कुछ अहम बातें पेश करना चाहती हूँ। हमारे मुल्क को आज़ादी आसानी से नहीं मिली, इसके पीछे हज़ारों लोगों की कुर्बानियाँ हैं। ये हमारे वो बहादुर लोग थे जिन्होंने अपने वतन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान जैसे लोगों ने गोलियों के सामने सीना तान कर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। उन्होंने अपना घर, आराम और अपनी ज़िंदगी सब कुछ मुल्क के नाम कर दी। उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज हम आज़ाद हुए। अगर वो ना होते तो आज हम गुलामी में होते। हमारा वतन 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे आज़ाद हुआ था। इस रात से ही हमारी सुबह आज़ादी की सुबह बनी। आखिर में मैं अपनी बात 2 लाइन के साथ खत्म करती हूँ। मिटा देंगे हैं दुश्मन तेरे नामो निशान को, मिटा देंगे हैं दुश्मन तेरे नामो निशान को, अगर तूने देखा मैली आँख से हिंदुस्तान को। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MashaAllah, she was Aisha Sheikh Ghaffar from 6A.
Now we have again very talented girls from 5th A. They are going to present here a patriotic song from girls from 5th A. Come on. We must appreciate them. These are very talented girls who will present here. Alhamdulillah, we were waiting for our Vice President Abdul Azim Sheikh Chand sir, and Alhamdulillah, we are very fortunate now he is among us. And our executive member Muhammad Kareem Sheikh Chand sir, they both come here and I welcome them. Sir, please. That very precious moment I would like to request. Abdul Azim Sheikh Chand sir, the Vice President of Super Foundation, and Muhammad Kareem Sheikh Chand sir, Executive Member of Super Foundation. We welcome them and thanks a lot sir, you spent your precious time and came here to appreciate our students. Thank you. These are the girls of they presented here. MashaAllah. We must appreciate them and particularly our father Ansari sir also.
See, we are very fortunate. Our executive member, Sayyid Sohail Ahmed, Sayyid Yunus, the executive member of Sufa Foundation, they came now and I welcome them from the teachers of Sufa English School. Sir, you spent your precious time and came here to appreciate our students. I heartily welcome you, sir. Thank you so much. See, we go further now. I have a girl, Amreen Fatima Sheikh Sabir from 6A. She will deliver a speech here in Marathi. See, most of the languages we have heard here, that Hindi, Urdu, Marathi, English. How nicely our students speak in Marathi also. So we must appreciate the students who will come here to deliver a speech in Marathi. She is Amreen Fatima Sheikh Sabir from 6A. Come here. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष माननीय मोहम्मद फाजल सर, प्राचार्य अब्दुल साबिर सर, माननीय मुख्याध्यापक अयूब खान सर, शैक्षणिक समुपदेशक सय्यद जाफर अली सर, पर्यवेक्षिका फरीदा अली मॅम, सर्व शिक्षक वृंद व माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मी अमरीन फातिमा वर्ग 6व्या अ ची विद्यार्थिनी. वीरांचा देश भारत महान, वीरांचा देश भारत महान, त्यागाने मिळाले स्वातंत्र्यदान. तिरंगा फडकतो आकाशी, तिरंगा फडकतो आकाशी, स्वातंत्र्याचा गौरव सर्वांच्या मनाशी, सर्वांच्या मनाशी. आज आपण सर्वजण आपल्या देशाच्या 80व्या स्वातंत्र्य दिवस साजरा करत आहोत. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला गुलामीतून मुक्ती मिळाली. हे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आझाद, टिपू सुलतान यांसारख्या महान नेत्यांनी अपार त्याग केला. स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त परकीय सत्तेपासून मुक्ती नाही, तर जबाबदारीने जगणे आहे. आपण तरुण पिढी म्हणून शिक्षण, प्रामाणिकपणा आणि एकतेने भारताला पुढे नेले पाहिजे. आजच्या काळात आपल्याला तंत्रज्ञान, विज्ञान आणि असमानता दूर करून आपण भारताला अधिक सक्षम आणि आदर्श राष्ट्र बनवू शकतो. प्रत्येक नागरिकाने आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवली तर भारत जगात सर्वोत्तम स्थान मिळवेल. चला, आज आपण सर्वजण एक संकल्प करूया. देशभक्ती जगू, भ्रष्टाचाराला विरोध करू आणि भारताला जगातील सर्वोत्तम राष्ट्र बनवू. धन्यवाद. सर्वांना स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. माशाअल्लाह. She was Amreen Fatima Sheikh Sabir from 6A. See, after observing the talents of such students, as we listened to before also, mashallah, how talented students they came here and they show us their talent. मैं उनके लिए कुछ लाइनें कहना चाहूँगा कि बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूँगा. मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूँगा. मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूँ दीवार का अपनी, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूँगा. ये टैलेंटेड स्टूडेंट, अगर हमने इनकी सही परवरिश की, इनको सही गाइड किए, तो रियली दे विल लीड आवर नेशन इन फ्यूचर इंशाल्लाह. So we go further. Now I have a student, Zikra Fatima Luqman Ahmed Khan, 6A. She will come here and deliver a speech. So please, I would like to request all the students, we must appreciate the students who are coming here. So come, welcome with me, Zikra Fatima Luqman Ahmed, 6A. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear faculty, honorable teachers and my Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear faculty, honorable teachers and my dear friends. My name is Zikra Fatima from 7th sector. Today I feel proud to speak on the occasion of India's 18th independence. Freedom is not just a book. Madam boys, please, she is speaking to you. So silently we have to listen to her. We must appreciate. She is very talented girl. Very continue. So listen to her carefully. Freedom is not just a book. They dream of millions of brave hearts that turn into yet. They gave their lives so we could live with dignity, peace and hope. आज हम जो खुली हवा में सांस लेते हैं अपनी शरीर की बदौलत, ये
never forget the sacrifices of our freedom fighters. As a Muslim, I believe that loving our country is a part of being a responsible and grateful person. Islam also teaches us to be kind, honest, and helpful. These values can make us a better citizen and make our nation brighter. India is a beautiful garden for the people of different religions, languages, and cultures to live together. हमारी ताकत हमारी एकता है, न कि हमारी division. Today, instead of asking what is India given us, let us ask what can I give to India? Will we respect every religion? Will we protect our environment? Will we always speak the truth? अगर जवाब yes है, तो वही असली देशभक्ति है. My dear friends, the future of India is not just in the hands of our leaders, it's also in our hands. Every good action, every kind word, and every honest step can make our nation brighter. Let us remember our heroes not by our words, but by our actions. हिंदुस्तान सिर्फ हमारा मुल्क नहीं, ये हमारी पहचान है. इसकी इज्जत हमारी इज्जत है, इसकी तरक्की हमारी तरक्की है, और ये हमारा फर्ज है. I pray that maybe Allah bless our beloved India with peace, unity, prosperity, and happiness. Ameen. I would like to end my speech with a share. न हिंदू न मुसलमान पहले हिंदुस्तानी, न हिंदू न मुसलमान पहले हिंदुस्तानी, एक करिए देश की असली निशानी. Thank you. MashaAllah, she is really very courageous and how impressive she delivered a speech here. We can see a soldier, an infant soldier before us. We must appreciate him also. MashaAllah. Mawia Ashmal Khan Afzal Khan. He will come here and deliver a speech. Mawia Ashmal Khan Afzal Khan, 8B. Respected President and all the dignitaries here present here. Good morning everyone. Today we are here to celebrate our Independence Day with great pride and happiness. Independence Day is celebrated on 15th of August every year because on this day in 1947 India became free from British rule. As remember and salute our brave freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Ashfaqullah and Rani Lakshmibai and many others who sacrificed their life for our country. And today India is a free, strong and democratic nation. As responsible citizens, we should love our country, respect our national flag, obey rules, keep our surrounding clean and help others. On this special day, we host the national flag, sing the national anthem and take a pledge to work hard for the progress for our nation. Let's always be honest, kind and responsible citizens and make India proud. Thank you. Happy Independence Day to all. Actually, he was suffering from fever since yesterday. So, but he tried his level best. We must appreciate him also. See, we have a last speech now. The girl Sahila Fatima, daughter of Ashiki Rasul from 8B. She is really a talented student of 8B. She will come here and deliver a speech. See, all the students listen to me, and particularly you look at me. It is the last speech. After that, you should know this year we have sweet to distribute. So you have to correct that also before that. And now I am calling the girl. So listen her carefully. Sahila Fatima Ashiki. नहीं लगा था बेटा कुछ नहीं अच्छा We will listen her, but we have another program also. See, it was in the first, but unfortunately we didn't have all the guests here. But alhamdulillah, most of the guests are present here. So we are going to felicitate
management and another personality also. First of all, Alhamdulillah, among us, Muhammad Fazil, Muhammad Abdul Razak, the president of Super Foundation. Muhammad Fazil sir present here. So first of all, I would like to request our HM Ayub Khan sir to felicitate our president of Super Foundation, Muhammad Fazil, Muhammad Abdul Razak. Thank you so much, sir. We should know that among us, the Vice President of Super Foundation, Abdul Azim Sheikh Chansar, present here. I would like to our Principal, Abdul Sabir sir. Sir, please felicitate the Vice President of Super Foundation, Abdul Azim Sheikh Chansar. Thank you so much, sir. Another personality we have Ayaz Ahmed Khan, Shabbir Khan, the Secretary of Super Foundation. I would like to request Saeed Khan sir. Sir, please appreciate Ayaz Ahmed Khan, Shabbir Khan sir. Thank you so much, sir. See, another executive member, the very important personality, Muhammad Kareem Sheikh Khan sir. I would like to Kamar sir. Sir, please. Kamar Ali sir. Kamar Ali sir, please felicitate Muhammad Kareem Sheikh Chansar, Executive Member of Super Foundation. Thank you so much, sir. Another Executive Member of Super Foundation, Sayyid Sohail Ahmed Sayyid Yunus. I would like to request Arfat Ansari sir to felicitate Sayyid Sohail Ahmed Sayyid Yunus sir, Executive Member. Thank you so much, sir. Next, our Principal Abdul Sabir sir is here, so I would like to request Sami sir. Sir, please appreciate Abdul Sabir sir, the Principal of Super High School. Thank you. Next is our HM Ayub Khan sir. I would like to felicitate Chief Master Ayub Khan sir, the HM of Super. We are very fortunate, Sayyid Jafar sir, Educational Councillor, present here. I would like to call here Bakar sir to felicitate him. Sayyid Jafar sir. Thank you, sir. See, we go further. We know that our football team, we should know that we are champion in football. So many trophies. When I work in another school also, we heard about the Super English School. He is the champion of Subarto Mukherjee tournament and other tournament also. We have very nice coach, very successful coach. You know that? None of them is Said Khan sir. So we have to felicitate him today. I would like to request our principal Abdul Sabir sir to felicitate Said Khan, the coach of football. And another sport teacher we have, Arafat Ansari sir. I would like to call him also here. And Ayub sir will felicitate Arafat sir, and Said sir will be felicitated by the principal Abdul Sabir sir. We welcome you, sir. We must अल्लाह नजर बस से बचाए। और आज हमारे बच्चे यहाँ सुबर्तो मुखर्जी खेल रहे हैं। इंशाल्लाह हम फीफा वर्ल्ड कप में भी उन्हें देखेंगे मंडी। The very talented girl Samila Fatima, daughter of Ashiki Rusul. She will come here and deliver a speech. So I would like to instruct you, all the girls and boys, listen to her care. A very warm morning to respected President and all the dignitaries presented here. My name is Saira Fatima and I am class 8A standing before you for delivering a speech. First of all, a very happy Independence
but also the courage and the sacrifice of a great man and woman who made it possible. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. This world reminds us that freedom was earned from sacrifice, not given the gift. We proudly remember our great freedom fighters like Ashfaqullah Khan, Abdul Ghaffar Khan and many others who fought for one day, a free united India. This year we are celebrating the best independence just because of the youth. मदद नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, मदद नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना. हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा. Even our constitution word also said that we the people of India, not we the Muslim, we the Hindu. Even our Tiranga also said that every Indian citizen is equal and the unity is the greatest strength. At last I want to say, कुछ बात है कि हंसती मिट्टी नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिट्टी नहीं हमारी. सदियों रहा दुश्मन दौर जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. थैंक यू. MashaAllah, she was Sahira Fatima, daughter of Ashiqi Rasool, age B. See, the another event which we are having now, the prize distribution of sports certificate. So all the dignitaries will felicitate our students also here. So first of all, I would like to request the sir to call all the students here. हेलो, स्टेट फुटसल के सभी प्लेयर्स जल्दी से जल्दी यहाँ सामने आ जाओ बेटा. मैं थोड़ी सी जानकारी हमारे जो प्रमुख अतिथि और हमारे से जो सभी गेस्ट है मैनेजमेंट के सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स से सुफा इंग्लिश हाई स्कूल की फुटसल यानी फुटबॉल की जो अंडर 14 का टीम है लगातार स्टेट के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है. अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हम डिस्ट्रिक्ट विनर रह चुके हैं अंडर 15 अंडर 17 में और विभागीय स्पर्धा में हमें सेकंड प्लेस मिला है दोनों ही ग्रुप में. मैं हमारे सभी जितने भी अतिथि हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो थोड़ा सामने आ जाए और हमारे जो स्टेट के जो प्लेयर्स हैं अंडर 17 बॉयज़ के उनके जो प्रमाण पत्र हैं उन्हें दें. उमर आकिब खान फाजिल सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर, मोहम्मद जाहिद इकबाल, अजूल सर, अफान हुसैन, शेख अयान अब्दुल खालिद, कलीम सर, समीर मुकर्रम बेग, ये सभी बेटा उमर रुको 2 मिनट बेटा फोटो के लिए साइड में रुको. उस्मान यासिर खान, अयाज सर, मोहम्मद जियाद उमर, मोहम्मद साबिर, तहमान खान, तनवीर खान, तहमान खान, मोहम्मद सुफियान खान, और ये जो सर्टिफिकेट है ये आए नहीं है तो मैं हमारे कलीम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोहम्मद अम्मार का सर्टिफिकेट आप खुद लें. फाजिल सर, मोहम्मद अम्मार का स्टेट का सर्टिफिकेट. इसी तरह अंडर 15 के जो बॉयज हैं लास्ट ईयर 26 जनवरी को मैंने 2-3 सर्टिफिकेट दिया था, समय बहुत कम था इसलिए. तो बाकी के जो सर्टिफिकेट आज हमने डिसाइड किए थे जबी खान, इमाम खान, हसन रजा खान, फास्ट हो बेटा, असलाम सैफ, अरसलान, शेख शामिर, मोहम्मद जैद, शेख कमरुद्दीन, मोहम्मद अरकम, क्लैप करो ना बेटा, क्लैप की नूर मोहम्मद, मोहम्मद जाहिद इकबाल. लास्ट ईयर के जो हमारे विभागीय स्पर्धा का जो टूर्नामेंट हुआ था, जाहिद आओ बेटा.
यहीं खड़े हैं। समीर मिर्जा, हाँ हाँ वो दो ही डबल। अयान खान, सॉरी शेख अयान, अदीन अहमद, अदीन जल्दी आओ बेटा, फास्ट दौड़ के आओ। अब्दुल साबिर सर, रहमान, अबू बकर सिद्दीक सर, अयूब खान सर, सुफियान खान, रहमतुल्लाह खान सर, मोहम्मद साद, अब्दुल खालिद, मोहम्मद आतिफ तेली, okay, thank you so much sir, all of you. One photo with all the certificate winner. यहाँ आ जाइए बेटा, बैठ जाइए आप सब लोग। सर आप खड़े रहिए, इनको बैठा दीजिए। बैठ जाओ नीचे, फोटो बैठा, सब घुटने पे बैठो। खड़ा करे हाँ आ जाओ जियाद, जल्दी आओ बेटा, पास बड़ा क्या कर रहे हो तू? तो बैठने वाले नहीं, इधर आ जाओ। ए क्लैप 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 क्लैप। देखिए बाकी की जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको मंडे को मुझसे लेना है यहाँ से। मंडे के दिन जो बच्चे लास्ट ईयर खेले थे उनके सर्टिफिकेट मेरे पास है, वो लेकर जाना है मंडे को, याद से भूलना नहीं। See, as I told you that sweet is waiting for you. So after collecting sweet, inshallah we will go to our home. But before that, we have a presidential speech will be delivered by the president of the foundation, Muhammad Fazil Muhammad Abdul Razzaq sir. He will deliver a speech. I request him, sir, please guide us. अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे बच्चों और यहाँ पे जितने भी मेरे मैनेजमेंट के साथी हैं, हम सब आप लोगों को तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और हम आज 80वां स्वतंत्र दिवस इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मुसलमानों की कुर्बानियों का नतीजा है कि ये एक मुल्क आज़ाद हुआ और इसको आपको संभाल के लेके चलना है और इसके लिए संभालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पढ़ाई में बहुत आगे जाओ। अभी देखिए जितने नाम माशाल्लाह ये अपने शहीदों के लिखे हुए हैं, आप इनको याद करो कौन है, किसने क्या कुर्बानी दिया। अब इसकी नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए आपको आपका तालीम मेयार बुलंद करना होगा। इंशाल्लाह अगर हमारी कौम तालीम के मैदान में खड़ी हो गई तो हमारे को बहुत ज़्यादा पूरी कौम को फ़ायदा होगा। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारे सुफ़ा फाउंडेशन के जो बच्चे हैं जिसके हर मैदान में आगे हैं, खासतौर से फुटबॉल के मैदान में तो आगे आप देख ही रहे, उसी तरह ज़िंदगी के हर शोबे में भी आगे रहेंगे और एक सच्चा पक्का मुसलमान बनेंगे जिस तरह हमको अल्लाह ताला को मतलूब है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको खूब खुशियाँ नसीब करे और आने वाले कल का सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। आमीन वक़्तना हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you so much for your guidance. Inshallah, we will follow the instructions given by the President of the Foundation, Muhammad Fazil sir. And again, I would like to call here Kamal Ali sir for vote of thanks. Sir, please. चिनार अब हमारा, हिंदोसिता हमारा,
मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा हिंदू सुधा हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, तैरों के साए भी हम पल पर जवाब हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा। स्टेज पर मौजूद मोहतरम जनाब मिस्टर फाजिल सर, प्रेसिडेंट ऑफ द सफा फाउंडेशन, जनाब अब्दुल अजीम फलाई साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सफा फाउंडेशन, जनाब अयाज अहमद खान साहब, सेक्रेटरी ऑफ सफा फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जनाब मोहतरम करीम सर और सैयद सैयद साहब, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जनाब अब्दुल साबिर सर, हेड मास्टर साहब जनाब अयूब खान सर, एजुकेशनल काउंसलर जनाब सैयद जाफर सर और मेरे तमाम कलीग्स और प्यारे बच्चे और मजीद बना जनाब फराज आरिफ साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम की निजामत की, और प्यारे बच्चे, मैं आप तमाम लोगों का मशकूर और ममनून हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। अब बहुत मुसद्दर मैं प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तीन सर्टिफिकेट वहाँ टेबल पे रह गए थे, तो मैं तीनों से सर से रिक्वेस्ट करूँगा, फाजिल सर से, जकी को, जियान और अफान को सर्टिफिकेट है। क्लैप करो बेटे, क्लैप। उधर लड़की का भी बांट देंगे अपन भी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मौली खान साहब से मैं दरखास्त करता हूँ वो तिलावत। A good habit we will learn today. See, you are eating a chocolate now, but the cover, what will you do? That you will not throw it here. You will take it with you and out of the campus you will throw it. There is a dustbin also. All the students, if you will throw it on the ground, pick up it. Pick up the cover of the chocolate. You will take it with you and throw it into the bin out of the campus. I hope that you will follow. The teachers also requested to instruct them to take with them. And now, Mauli Muhammad Irfan Ahmad Qasim Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए सब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र।